है। पहला डिजिट हमेशा बड़ा क्यों? हमेशा बड़ा क्यों होता है? Okay. Good morning, all of you. Hope all well. Today topic numerical based on Coulomb's law in vector form. Everyone know vector and scalar. Scalar which tell only magnitude, but vector which tell magnitude as well as direction. Same under two condition. We prove this law in vector form. First condition, if q1, q2 greater than 0 and q1, q2 less than 0. In board exam, 1 marks question, tell the nature of force under these condition and these condition. It's so simple. If magnitude of charge greater than 0, it's possible when both are like, maybe both are positive, maybe both are negative, then magnitude greater than 0. If same thing, we consider A and B two bodies having charges Q1 and both are obviously like charges, and we know according to property of charge, like charges repel to each other and unlike charges attract to each other. Same thing हमने property जब study की थी, 3 basic properties थी, quantization of charge जिसमें आप Q की वैल्यू फाइंड आउट करते थे n इंटू ई से, और n अगर हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड आउट करना था देन q बाय e. हेयर चार्ज ऑन बॉडी, number of electron, and E is the charge on electron having fixed value, and it is the least charge particle. इधर से क्वेश्चन भी पिकअप हुआ है 4 मार्क्स का कंपटीशन में. फाइंड द फोर्स बिटवीन least charge particle. If they are separated by distance 1 meter. सेम फॉर्मूला अप्लाई होगा जो हमने कल डिस्कस किया था लेक्चर में. यहाँ पे ओनली बच्चे को थोड़ा सा माइंड लगाना है. एक्चुअली क्या होता है, अगर डायरेक्ट वैल्यूज गिवन है बच्चा इजिली न्यूमेरिकल सॉल्व कर देता है. अब कल जो प्रॉब्लम्स हम कर रहे थे उधर Q1 गिवन था, Q2 गिवन था, डिस्टेंस गिवन था, तो इजिली आपको फॉर्मूले में पुट करना था. बट यहाँ पे थोड़ा सा आपने अपना नॉलेज के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे देखना है कि गिवन क्या है, लीस्ट चार्ज, और आपको नॉलेज होनी चाहिए लीस्ट चार्ज पार्टिकल इज इलेक्ट्रॉन. तो ऑब्वियसली चार्ज का मैग्नीट्यूड हेयर 1.6 10⁻⁻19 आर हेयर 1 मीटर. तो इजिली यू अप्लाई Coulomb's law and calculate it. In vector form, from first body to second distance you consider r12 vector, and from second to first it is r21 vector, because we study in vector form, and force exert on first to second and second to first, f12 and f21 vector. How you calculate it? If you find out f12 vector, then k q1 q2 by r21 vector का square, r21 unit vector. Maybe you can write this like, if you because you know unit vector equal to vector by its magnitude. Unit vector equal to vector by its magnitude. If you change this, then k q1 q2 magnitude of r21 vector का cube, r21 vector only. Now it is f12 vector. Similarly, f21 vector.
K, Q1, Q2 magnitude of R vector का cube and R12 vector. अगर हमने इधर डायरेक्शन मेंशन की है तो आपका रिक्वायरमेंट नहीं है, वो अंडरस्टूड है. इट इज ऑल्सो R12 vector. Maybe you write here or not. In repulsive condition you prove when force first to second, then distance you consider second to first. If here second to first, then distance here first to second. But in second condition, Q1, Q2 less than 0. In first condition, force is repulsive in nature. Here we clear it is attractive in nature. Yeah, you can say it is the attractive force. Same thing you consider. Two bodies A and B having charges Q1 and Q2 separated by distance R12 vector and R21 vector. It is attractive, so force exert on it F12 vector and a F21 vector. According to statement, yeah, according to law, you can write F12 vector is equal to K Q1 Q2 and R12 vector का cube R12 vector. डायरेक्टली हमने वैल्यू पुट की है. वैसे तो नॉर्मली आप फॉर्मूला रखते तो आपका होता F12 इज इक्वल टू K Q1 Q2 R 12 vector का square and here a unit vector. But when we change it, unit vector is vector by its magnitude, then cube here. Similarly, F21 here, K Q1 Q2 R21 vector का cube and R21 vector here. Hence, you prove these conditions. It's an important topic. And numerical, firstly superposition, after that we solve numerical based on it. Superposition principle. According to Coulomb's law, we study force between only two charges. But if number of charges are given here surrounding point charges, we consider it is the point charges, and number of charges are here Q1, Q2, Q3, Q4 and Qn. Then we know superposition in 11th class also we study. In wave motion you apply when you find out the net displacement of two waves, y is equal to y1 plus y2. Same thing here. If force between a number of charges, then you apply superposition principle. What is this? It is force exert on point charge is equal to the vector sum of all the individual forces exert due to individual charges. Force exert on point charge F naught vector is equal to the force vector sum of all the forces acting due to individual charges. How you explain it? When you prove this? Consider a point charge Q naught, which are separated R naught distance from the origin. Another charges like
Q1, Q2, Qn, surrounded it, and separated by distance R1 vector, R2 vector, and Rn vector from the origin. Q1 exert force on Q0, it is F0, 1 vector, and distance you know it's a R1, 0. Same thing, Q2 exert force on Q0, then it is F0, 2 vector, and Qn exert force on Q0, it's F0 n vector. Here clear? F0, 1 according to statement, yeah, according to law, how you derive it? Force exert on Q0 due to Q1. It is the K Q0 Q1 R10 vector ka square R10 unit vector. Similarly, F02 K Q0 Q2 R20 vector ka square R20 unit vector up to so on. F0n K Q0 Qn Rn0 vector ka square Rn0 unit vector. Adding vertically. Adding vertically. It's so simple. Only हमने लो अप्लाई किया है, कॉन्सेप्ट वही है. बिटवीन टू चार्जेस हमने फाइंड आउट किए हैं. आफ्टर दैट F01 vector plus F02 plus F0 up to so on. F0 n vector is equal to K Q नोट लेफ्ट हैंड में ऐड किया, राइट हैंड साइड राइट हैंड. Q1 R10 वेक्टर का स्क्वायर यूनिट वेक्टर प्लस K Q0 Q2 R20 and R20 you can say या 0 plus up to so on K Q0 Qn Rn0 vector का square Rn0 unit vector. According to statement, you know it's equal to F naught vector. According to statement. It's equal to F naught vector. And here K Q naught common here and Q1 by R10 vector का square plus Q2 by R20 vector का square. Unit vector also you write here with this. R20 vector का square plus up to so on Qn by Rn0 vector का square Rn0 unit vector. According to mathematics, it is continuously first, second up to nth. Then in mathematics, if you add all this, then we use summation या sigma. K Q naught here, sigma I is equal to 1 to n Qi by Ri0 vector का square and it is the unit vector. If you write in position vector form, then you write F naught vector is equal to K Q naught sigma I is equal to 1 to n Qi R naught या R0 minus Ri
वेक्टर का स्क्वायर यूनिट वेक्टर. It is in position vector form. Again, okay, it's clear. If number of charges are given here, then by using superposition principle, we find out algebraic sum of all the forces. Numerical based on it. Question first. If three charges, 2 microcoulomb, 3 microcoulomb, and 1 microcoulomb are placed vertices of a triangle, find the net for of the triangle having side 2 meter. Find the net force या फिर total force exerted by all the charges. Obviously more than 2 charges है. Clear है? तो which principle you apply here? नेट फोर्स फाइंड आउट करना है तो सिंपली फर्स्टली अगर हम फाइंड आउट करेंगे F1 वेक्टर, F2 वेक्टर, F3 वेक्टर, आफ्टर दैट नेट फोर्स इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल द फोर्सेस. यू नो हाउ यू कैलकुलेट इट. अब ऑब्वियसली जो कॉन्सेप्ट होगा जो अभी हम अप्लाई करेंगे सेम रहेगा बट कंडीशंस आपकी चेंज होगी क्योंकि अभी ट्राइंगल के ही एवरी क्वेश्चंस अगर हम ट्राई करेंगे तो इधर हमने सभी का मैग्नीट्यूड क्या लिया है, पॉजिटिव लिया है. अब ऐसा भी होगा कि नेक्स्ट केस में आपका चार्जेस वन पॉजिटिव नेक्स्ट नेगेटिव मे बी. अदर एग्जांपल्स में आपको सेंटर पे भी चार्ज गिवन होगा, वो डिपेंड करेगा. अब वो आउटर फोर्स आपसे ना पूछे फिर वो चार्ज ड्यू टू दिस फोर्स ड्यू टू दिस सेंट्रल चार्ज तो हमें साइड्स फाइंड आउट करनी पड़ेगी. आफ्टर दैट हम उसे कंसीडर करेंगे. सेम प्रॉब्लम्स इन स्क्वेयर्स में होगा. अगर ऑल पॉजिटिव है तो ऑब्वियसली अभी अभी जैसे हम लो अप्लाई करेंगे यहाँ पे फोर्स फाइंड आउट करेंगे सेम हम स्क्वेयर में फाइंड आउट करेंगे. चार्जेस अगर पॉजिटिव नहीं है सेंटर पे नेगेटिव चार्ज है फिर डायरेक्शन का चेंज होगा. ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज वी नो आउटवर्ड डायरेक्शन एंड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज इनवर्ड डायरेक्शन. आपका मेथड सॉल्व करने का सेम होगा. ओनली अगर मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज चेंज होगा तो ओनली डायरेक्शन ही आपकी इफेक्टेड होगी. फॉर एग्जांपल अगर मैंने यहाँ पे -1 माइक्रोकुलाम लिया इधर 1 माइक्रोकुलाम है तो क्लियर सी बात है इन दोनों के बीच अगर हम फोर्स फाइंड आउट करेंगे तो वन चार्ज इज पॉजिटिव एंड अदर इज नेगेटिव. तो अकॉर्डिंग टू दैट हम डायरेक्शन कंसीडर करेंगे. हम अपना जो न्यूमेरिकल गिवन है हाउ यू सॉल्व इट. स्टेटमेंट क्लियर है. लेट अस कंसीडर triangle ABC having charges 2 microcoulomb, 3 microcoulomb and here sides equal है तो आप ड्रॉ भी इक्वली कर लीजिए. Equal having all sides are 2 meter like this. It is 2 meter, it is also 2 and it is also 2. A
B, and here C. Charge on it 2 microcoulomb, 3 microcoulomb, and here 1 microcoulomb. How you calculate force? Firstly, it is the FAB, and due to this FAC, and same here FAB, a BA you can write, and next due to this FBC according to figure BC. Next here it is FBC, and it is FAC, and we know its resultant. For example, it's F1 vector, it's we consider F2 vector, and it's F3 vector. How you calculate it? आपने पैरेललोग्राम स्टडी किया था या ट्राइंगल लो भी आपने स्टडी किया है? यू रिमेम्बर what is this? If you find out F1 according to figure, under the root of F AB का square, right, plus F AC का square plus 2 F AB and F AC. Angle here, you know, average 60, 60, 60. Yes or no? Then formula here we know R vector is equal to under the root of A square plus B square plus 2AB cos theta. Then here according to that cos 60. वैल्यू मेजर करना आपको 10th क्लास में ही सीखा है आपने. 0 डिग्री, 30, 45, 60 and 90. 0, 1, 2, 3, 4, and here are 4, 3, 2, 1, 0 divided by 4, 4, 4. अगर किसी का कॉन्सेप्ट भी वीक है तो वो साइड में निकाल सकता है रफ पेजेस पे. रूट ऑफ दिस. तो क्लियर सी बात है. इधर क्या आ रहा था? 1√4 यानी कि 1/2. And here FAB. Firstly, we calculate FAB. How? K QA QB and distance RAB का square. Then here 9 into 10 raised to the power 9. Charge here QA 2 microcoulomb. 2 into 10 की minus 6, and this charge in next page solid 3 into 10 raised to the power minus 6 and divided by 2 into 2. 9 3 जा 27, 10 raised to the power 9 and minus 12 divide by 2, which is equal to 13.5 and 10 raised to the power minus 3 Newton. Similarly, you calculate FAC. How? By using this relation FA into QA into QC and distance का square, and next by putting value of FAB and FAC in this equation we measure F1 vector. Similarly F2 and F3 by using this relation, then you solve it. Done sir? करें? बचे हुए हैं अभी कर लेते हैं फिर तो. Next F
BC here. फिगर अगेन हम ड्रॉ करेंगे. A, B, C, 2 microcoulomb, 3 microcoulomb, and here 1 microcoulomb. It is FAC. It is FBA. BA. And resultant we consider F1 vector. तो हम जो हमारा फोर्स लास्ट कैलकुलेट हुआ था FBA हैविंग मैग्नीट्यूड 13.5 10 raised to the power -3 Newton. Now FBC 9 into 10 raised to the power 9 value of K and QB here FAC. ठीक है. FBA. Okay. FBA and FAC. AC here. AC. 2 into 10 raised to the power -6. 1 into 10 raised to the power -6 and 2 into 2. Same thing. 9 by 2. 10 raised to the power 9 minus 12. Because base equal, then we add powers. Here a 4.5 into 10 raised to the power -3 Newton. It is FAC. By putting in formula, F1 vector is equal to under the root of F AB का BA का square and plus F AC का square and plus twice of FBA FAC into 1 by 2. हमने cos 60 की वैल्यू पुट की है. Then here according to that its value 13.5 into 10 की -3 का square and plus 4.5 10 raised to the power -3 का square and plus 2 into 13.5 10 raised to the power -3 and a 4.5 10 raised to the power -3 divided by 2. After solving it, obviously square है. Then remaining values here. If you consider it's common, any 10 raised to the power -3 square here, -3 square here, also 10 raised to the power -3 square here. Then 10 raised to the power -3 under the root of 13.5 का square plus 4.5 का square, 13.5 का square minus 4.5 का square and 13.5 into 4.5. Mathematically calculate it, then answer in Newton. It's our net force. Done, sir? Tushar, sir?